This is Reporters Project, where CNN News 18 reporters get you the impact of policies and politics on the common man. Sukha, Rukha, Bhuka. That's how locals often describe the Bundelkhand region they inhabit, and that overlaps the states of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. There's acute and chronic water scarcity here that affects every aspect of life. Every day, it's an existential struggle for water. And like everywhere else, it's women who shoulder the entire burden of fending for their families' water needs. Zeba Warsi, who travels to 6 districts across the 2 states, finds that women are turning into water warriors on behalf of entire villages. And in the process, they are redefining the patriarchal concept of maryada, or honor, or limits to what they can do. Take a look. It's raining. One of the first showers of the season in Bundelkhand after a parched summer. Sumitra Shavas, the 45-year-old village pradhan, is especially happy today. This rain won't help, but it does bring joy. अब यही तो बढ़िया माहौल है, क्योंकि बारिश से तो आप लोगों को बहुत खुशी होती है। इतनी तेज बता तो रहे हैं, आप देखिए, खड़ी रहो, उतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो देखना पाइप से कितना बढ़िया पानी आएगा। Sumitra Shavas leads a group of around 20 women in Mohi village in Banda district who are returning from their weekly Jal Panchayat. It's part of a movement which began last summer, helped by local administration. Today, it's made an entire village self-sufficient in its water needs. These women water soldiers are to be credited. It is not a usual sight to see them marching down the village. A patriarchal society has bound them to household chores. But women here are playing a crucial role in water conservation. Known as Jal Sahelis, women of many other villages across Bundelkhand are stepping out to solve the water crisis. महिलाएं एक तो जल्दी जाती नहीं है, लेकिन उनकी अंदर की भावना देखो कि वो मतलब पानी से इतना ज़्यादा वो होकर तब तो सब कुछ छोड़ करके बाहर निकली काम करने के लिए। नहीं बरा किसी महिलाओं को कहो, अब जैसे आप ही देखा होगा, बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, वो बस चली गई, हमारे पास समय नहीं। लेकिन पानी की समस्या की उससे वो लोग बराबर करती नहीं काम। 4 बाल्टी में हाथ ढाल ले। These women are doing it all themselves. Every drop of rain is precious and must be saved if it is not being used. So they clean wells, desilt lakes and spread awareness on water budgeting. That is fixing a specific amount of water for chores to ensure no wastage. Rainwater is collected on rooftops and linked to wells and lakes through pipes. ये छत का पानी जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं, छत का पानी रोक के ये कुओं में है, तालाबों में है, भेज रहे हैं कि ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो नहीं होगा, जानवरों के और हमारे कपड़े धोने के इस्तेमाल में तो आएगा, कुआं का पानी तो पीने के भी योग में आ जाएगा। अगर पानी नहीं बचाएंगे तो फिर परेशानी तो हम ही लोग को उठाना पड़ेगा। कपड़े धुलने में उस तरह में ज़्यादा पानी यूज करते थे, कम करते हैं, 50 लीटर करते थे कपड़े धुलने में, इसका हम 30 कर रहे हैं। खाना बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज करते थे, 2 बाल्टी करते थे तो 1 ही बाल्टी कर रहे हैं, 10 लीटर करते हैं। इसी तरह थोड़ा कम करते जा रहे हैं। All these women still wear their ghungats. They are expected to stay within the boundaries of their home. But leading Jal Panchayats and working for this cause has given them the chance to break societal boundaries. 5 साल हो गए शादी को तो अब कम रोकते हैं। 26-year-old Komal has always wanted to lead a purposeful life, beyond being a wife and a mother. As a teenager, she used to work for an NGO, but her husband made her stop that after she was married and had kids. Being a Jal Saheli allows her to live her dreams. हम भी महिला समाज के साथ काम कर चुकी हैं।
अच्छा, कब? जब पढ़ाई करती थी? हाँ, जब हाई स्कूल हो गया था, इसके बाद मैंने बीए जैसे 5 साल काम की थी। तो मुझे बाहर निकलने से बहुत मन खुश होता है, लेकिन जब नहीं निकल पाती हूँ तो अब अंदर घुटती रहती हूँ। लेकिन अब तो इसके चलते आप निकल सकती हो ना थोड़ा थोड़ा। जी हाँ फिर से दीदी, जुड़ जाओ। हम तो सोच रहे हैं कि जुड़ जाए। What these women are doing in Banda is needed across Bundelkhand, where the water ecosystem is broken. Studies show that every summer, almost 70 to 80% of lakes go completely dry and are eventually lost. I am standing on what used to be a lake spanning across 5 hectares of land. Over 5,000 people from different villages were dependent on the water sourced from this particular lake. It has been dried up like this for over 7 months now. Consecutive droughts have crippled the water resources in this entire region. It rained last night, so you can see a puddle of water that has formed. But people say even an adequate monsoon season this year will not be enough to fill the gap. In the Patha forest area in Chitrakoot district, the situation is even worse. More than 800 people in Society Coal village depend on this well for drinking water. If they have to shower or go to the toilet, they go 4 kilometers from here to a small pond. But both the well and the pond were mostly dry through the summer. यहाँ पानी नहीं रहता, खपड़ा नहीं पर चूहा थे, घर गिरा थे। It rained here last night, the third consecutive night of rain, and so the well has a shallow pool of water. The women are determined to guard it from being wasted. सब सूखा पड़ जाता है। They are self-appointed Jal Rakshaks. A harsh and parched summer has trained them well. They barely sleep as they sit near the well all day, all night. रोज का एक जने पानी का रहा आवत है घर में, एक जने पानी का और 10 जने का, जैसे जेके घर में 10 आदमी, जेको के घर में 8 आदमी, को के घर में 25 आदमी है, तो उन्हें पानी दिन भरे में 2 डिब्बा ये कुआं में मिला था। एक डिब्बा 25 लड़कियां वहीं में रहती हैं जो पानी के खाली दिन भर तक धूपे में बैठी रहती हैं, 2 बजे से 7-8 बजे तक रात दिन बराबर पानी कुआं कुआं बना यही तान आदमी सोते नहीं है, न औरत न मनसेरो कोहू नहीं सोए पानी के खातिर। There is one hand pump, but the water that comes out of it is extremely high in iron content and hence red in color. Would you drink this water? You may, when there is nothing else to drink. Children here sometimes eat black rice. The rice they cook in this water turns black. Many of the children are malnourished. Water is scarce and the daily diet of namak roti doesn't help. Life here literally revolves around water. 35-year-old Asha Devi's day includes 3 different trips to fetch water. Each return trip takes a minimum of 3 hours. The remainder of her day is a struggle too. She goes to the jungle to collect firewood and then walks 8 kilometers carrying 20 kgs of firewood to sell. She gets paid a meager 30 rupees for 1 stack. She returns home and fetches water for dinner. And so her day in a nutshell: fetch water, cook, fetch water, fetch firewood, fetch water, cook dinner, fetch water, and then start all over again. In neighboring Gopipur, it's dry even when it rains. The nearest source of water is a well that's around 3 kilometers from here. 2.5-3 इंची पानी निकल ही आए। Villagers use their bullock carts for several trips there in a day. ये है वो कुआं? ये कुआं है वहाँ, जो देखिए इससे उल्टे के पानी।
The severe water crisis, you would imagine, affects everyone equally. Yet, in Chittawat Kanja village in Jhansi district, caste lines continue to privilege the upper castes. This pipe connection works only when there's electricity and sources water from a borewell 4 kilometers away. Women in the village line up for hours at a stretch for their char dibba pani. But the upper caste women get their dibba first, and only once they've got their fill will the Dalit women be allowed to touch the pipe. आप लोगों के बर्तन इस तरफ है, उन लोगों के बर्तन उस तरफ है, ऐसा क्यों? दो ही तरफ है, अलग अलग है, हमारी तरफ उनके उस तरफ। क्यों ऐसा? वो हरिजन लोग इसलिए। तो हरिजन लोगों के साथ बर्तन नहीं रख सकते? ना, नहीं रख सकते। लड़ाई होती है, बेगुनी में तो लड़ाई हो रही, उनके अलग है, हमारे और के अलग है। हम लोग उनके बर्तन से छुप जाएंगे तो वे मानेंगे, बोले तुम लोग चमनी जात हो तो वे लोग बड़े जात हैं, तो इससे हम लोग बर्तन नहीं छुआते हैं। उनके कितने डब्बे भर जाते हैं, आपके कितने भर जाते हैं? हम लोग अभी बैठे हैं, अभी आ रहा है, अभी भरत जा रहा है, हम लोग खड़े ही हैं। जब इसे 1-2 घंटा होगा खड़े खड़े, अभी एक कल सा पानी नहीं मिलो उन लोगों के, खाली करके आ रहा है, फिर भरत जा रहा है, खाली करके आ रहा है, फिर भरत जा रहा है। जब तक इन लोगों को नहीं भरेंगे तब तक हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। चाहे शाम हो जाएगी, लाइट चली जाएगी तो हम लोग नीचे से जाएंगे, पानी का खाली ले जाएंगे अपने घर। Children are painfully aware of the catastrophe they live in. There's no question of going to school. They are needed to help get water. Some kids are as young as 4, like Mehak. She has marks all over her body from every time she has tripped while carrying pots of water. My name is Kaptan Yadav. I read in 6th class. I am 9 years old. Little Kaptan Yadav and thousands of children like him are living in Bundelkhand's dry villages where every drop of water counts. बड़ा बर्तन लेता है कोई टंकी मंकी। He has something to say to all of us. पानी की परेशानी है, गाँव में ज़्यादा है परेशानी, शहर में लोग मानते ही नहीं। शहर के लोग मानते नहीं है कि पानी कम यूज करो? नहीं, उनको तो बस नहाना तो कम से कम 1-1 घंटे नहा रहे। गांव में 1 बाल्टी में नहा जाते। पानी जितना तुम ज़्यादा खर्च मत करो पानी को, बस जितना तुमको चाहिए उतना ही खर्च करो, मत ज़्यादा पानी को खर्च मत करो, वरना पानी ही नहीं मिलेगा। फिर बाद में पानी को पछताओगे फिर। Out of the mouth of babes, as they say, that little boy there showing us the way. At CNN News 18 and at Network 18, we are committed to doing our bit to tackle the country's water crisis. You must have caught our campaign Mission Pani. We hope you will support it. Become a part of it today. Take the pledge to be a Jal Rakshak. The details are on the screen.